Hello friends, today we are going to start our new chapter GIT. In GIT, today we will study peptic ulcer disease. Okay, so peptic ulcer disease is due to imbalance between protective and aggressive factor, between aggressive factors and protective factors. So, what are aggressive factors? And what are protective factors? Aggressive factors are HCl and H. pylori, Helicobacter pylori. And protective factors are mucus and HCO3. So, for peptic ulcer disease, we are going to treat it by four type of drugs. First is to decrease acid inhibitor. Second is our antacids, and third is ulcer protective drugs, and fourth is H. pylori drugs. H. pylori drugs. So let's study our first acid inhibitor. We have to decrease the acid. Uh, in our stomach, acid HCl is produced by parietal cells, and in parietal cells there is a proton pump. So there are some factors which stimulate this proton pump are ACH and histamine. Third is it's stimulated by gastrin. ACH receptor is M1, histamine receptor S2, and gastrin receptor CCK. And prostaglandins PGE2, it inhibit the pump, proton pump. So to decrease acid we have to inhibit M1, H2, and we can stimulate prostaglandins, and also we can inhibit proton pump. So proton pump inhibitor, four type of drugs. So first, M1 blockers. M1 blocker examples are pyrenzapine and tilenjapine. Pyrenzapine and tilenjapine. It inhibit M1. Second, H2 blockers. H2 blocker example are cimetidine, ranitidine, famotidine, loxatidine. In this, nowadays cimetidine is not preferred. We not use cimetidine because it is a disco drug which cause gynecomastia. Disco drug DI, digitalisodigoxin, S is spironolactone, C is cimetidine, and O is estrogens. Okay, next our prostaglandins. Example of prostaglandin is misoprostol. Misoprostol, it is specific drug for NSAID induced peptic ulcer because it decrease prostaglandin. So in for long use of NSAID, it decrease PGE2, so it can cause peptic ulcer. So we give PGE2 analog misoprostol. Fourth drug is PPIs, proton pump inhibitors. Example of proton pump inhibitors are omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, and rabeprazole. They are irreversible inhibitors. Proton pump inhibitors are irreversible inhibitors. They are example of hit and run drugs.
it means uh, even after excretion the function is ongoing, and they do not work locally, they exert systemic effect. It means first they have to be absorbed in blood, and then it will inhibit proton pump. So they are normally acid labile. Because of acid labile, we have to give with acid resistant coating, that is our enteric coating. PPIs are very strong acid inhibitors, so they are drug of choice for very strong acid inhibitors. So they are drug of choice for peptic ulcer disease due to any reason, like we studied NSAID induced peptic ulcer. That misoprostol are most specific drugs for NSAID induced peptic ulcer, but DOC for NSAID induced peptic ulcer is PPI, not prostaglandins. So also drug of choice for GERD and drug of choice for Zollinger-Ellison syndrome or gastrinoma. There are some side effects related to PPIs. These are, they decrease calcium and vitamin B12 absorption. So because of decrease in calcium, they cause osteoporosis, and due to deficiency of B12, megaloblastic anemia. They also increase chances of infection and carcinoid syndrome, which are not noted in humans. So now moving to second is our antacid. They are fast pain relievers in peptic ulcer. Because in acid inhibitors there is decrease in acid, but there is already ulcer. So due to that ulcer pain is ongoing. So उसके लिए अपन डायरेक्ट फास्ट रिलीफ के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोज कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कोज डायरिया. सो वी गिव इन कम्बिनेशन फॉर GI मोटिलिटी. सो उसके वेल फंक्शन के लिए कम्बिनेशन में दे देते हैं. नेक्स्ट अपन आते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स पे. अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग मीन्स वी हैव टू गिव ए कवरिंग ऑन अल्सर सो दैट एसिड विल नॉट अफेक्ट. पहले अपन ने एसिड को कम करा, उसके बाद अपन ने एंटासिड दिए, अब एसिड की कवरिंग दे दी. उसके एग्जांपल्स हैं सुक्रोल फेट एंड कोलोइड बिस्मथ सब्सिट्रेट, जो कवर कर देते हैं उसको. जो कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट है, दिस कैन कोज बिस्मथ पॉइजनिंग. वो क्या करेंगे, बोन पे इफेक्ट डाल लेंगे, ओस्टियो डिस्ट्रोफी करवा सकते हैं, एंड ऑन ब्रेन दे कैन कोज एनसेफेलोपैथी. So for encephalopathy we can give BAL. Now moving to fourth, our H. pylori drugs. एक H. pylori हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो करवा सकता है पेप्टिक अल्सर. ड्रग ऑफ चॉइस अपन ने इसके लिए भी PPI है, बट H. pylori के लिए हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट देने पड़ेंगे. एग्जाम्पल्स एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लिथ्रोमाइसिन. सो इसके लिए PPI तो DOC जो बताया, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ट्रिपल ड्रग थेरेपी दे देंगे. 1 PPI प्लस 2 एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. याद रख सकते हैं कैप से प्रेफर जो करते हैं, कैप. C से क्लिथ्रोमाइसिन, A से एमोक्सिसिलिन एंड P से प्रोटोन पंप इनहिबिटर. सो ये अपना था सारा फार्मेकोलॉजी रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर डिजीज. सो पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर. ये देख लिया आपने, एग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर. फॉर ट्रीटमेंट 4 टाइप ऑफ ड्रग्स अपन यूज करते हैं, एसिड H2. उसके बाद एंटासिड फास्ट रिलीफ के लिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्सर प्रोटेक्टिव,
एच पाइलोरी ड्रग्स, ये अपने एग्जाम्पल्स हैं। ट्रिपल ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।